Okay, fine. So, Shwaren, for example, I have write down here the employee code E12 and we'll select the all cells together to get the multiple values. We look up. Our lookup value would be E12, right? Put comma. And in table array, we'll select the whole database from the employee code. Put comma. And for column number, I will open here the curly bracket and write down here the column number on a manual basis. Okay. 2, 3, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now we'll close the curly bracket here, put comma and range lookup type 0, close the bracket. And for answer, you have to press here Control Shift Enter key to get here. बट इस सिचुएशन में हम क्या इस फॉर्मूला को कॉपी कर पाएंगे? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर हियर अ डिफरेंट कोड E09, let's check. I'm going to drag down this formula. So it is working. तो आप सेम ये मेथड भी यूज कर सकते हो. And the another method is write down the column number just above the title and use this formula. You have both options. Okay. Okay, ma'am. Okay, now I'm going to open in another workbook. The last example of today's session, and after that I will share assignments with you. And Okay, ma'am. अभी डेटाबेस को क्विकली एंटर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया है रैंड बिटवीन, जिसमें आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो ऐश्वर्य. Okay. I hope you get the question. What do you think what we are going to do with this database? See, in sheet number 1, we have the student code and their name and their first semester marks, right? Okay. And in second worksheet, we have students and their second semester marks. Now, I want you to please find out the marks of second semester of all these students in worksheet number 1. Okay. अब जो वैल्यू हमें लुकअप करनी है वो इस बार सेम वर्कशीट पे ना होके एक डिफरेंट वर्कशीट में गिवन है. Okay. So guide me equals to VLOOKUP. Lookup value is E01. Yes. No, name. It all depends on you. Either you will search with code or either you search with name. Okay. Okay. So put comma here.
The table array would be on sheet number 2. Fine. The whole table. Do I need to log this table or not? Okay. Yes, ma'am. Yes, we need it. The reason being that क्योंकि हमें फॉर्मूला जो है वो कॉपी करना है, और अभी जो टेबल का रेफरेंस है इट इज गेटिंग A1 to C12, और फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पर सेल रेफरेंस लॉक नहीं किया देन कॉपी करने पर इट विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम A2 to C13, A3 to C14, where cells are getting blank. Okay. Yes, ma'am. So यहाँ पर क्या है, जब आप किसी और शीट का रेफरेंस लेकर डेटाबेस सेलेक्ट करते हो देन डू फॉलो दिस फॉर्मूला बार, दिस विल गाइड यू। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने गलती से भी अभी शीट नंबर 1 पे क्लिक कर दिया तो अभी जो शीट नंबर 2 का ये रेफरेंस दे रहा है ये इट विल टेक द रेफरेंस ऑफ शीट नंबर 1 ऑटोमेटिकली। समटाइम्स क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लुक एट हियर, लाइक ठीक है, दे Mm-hmm. आर वेयर अबाउट दैट वी नीड टू लॉक हियर टेबल, सो दे आर प्रेसिंग F4, F4, राइट। Mm-hmm. आफ्टर दिस दे सडनली स्विच टू द शीट नंबर 1। समटाइम जो है वो रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ पर केयरफुली फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल्स टू Oh, वी लुक अप, our lookup value is the student code E01, put mm-hmm. comma, and for table array, I'm going to select the sheet number 2 and selecting the database. Now we'll press here F4, the function key. Now Okay. put comma here. Now it is asking about the column number. So here we Uh, are looking for the semester 2 marks, and it is given in which column number? 3. Third column number. Am I right? Because according to the database, second semester marks is given in 3. third column. Now put comma, and for range lookup, you will write down here 0, close sub bracket, enter. सो जिन्होंने सेमेस्टर 2 अटेम्प्ट किया है ऐश्वर्या, उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ आ रहे हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वहां एक्सेल क्या एरर शो कर रहा है? अच्छा. Okay. N. Any not available. The reason being that I have intentionally deleted some rows from here. Just assuming that कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स गिवन नहीं है जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर अटेम्प्ट नहीं किया है. So that's why Excel is unable to find that particular name or find that particular code. Fine. तो यहाँ पर Yes, नॉट ma'am. अवेलेबल एरर आ रहा है. सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज हियर, क्या कोई ऐसा वे है कि हम इस एरर को किसी अदर वैल्यू से रिप्लेस कर पाए? लाइक ये एरर ना कुछ अजीब सा लग रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस एरर इट शुड गेट डिस्प्ले लाइक नॉट अवेलेबल, नॉट अटेम्प्टेड, एब्सेंट, कुछ इस तरीके का हम क्राइटेरिया डाल सकते हैं? Um. मीन्स जो जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेकंड शीट पे अवेलेबल नहीं है, तो या तो हम उसको डिक्लेयर कर दें दैट दे वर एब्सेंट, नॉट अटेम्प्टेड, समथिंग लाइक दिस, instead of this error. Then Aishwarya, we have an option. You can do it by anything, any other method too. But I'm telling you only one method here, and Mm. giving you a task to find another method too. कि हम इस एरर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, फाइन, किसी और Okay. वैल्यू से. अभी मैं जो मेथड बता रही हूँ एंड इट इज एन फॉर्मूला. एक फॉर्मूला है इफ एरर, एंड इट इज फॉर रिप्लेसिंग योर एरर विद अनदर वैल्यू. इफ एरर मीन्स अगर फॉर्मूला में एरर आए तो व्हाट टू डू? सो इट इज आस्किंग वैल्यू. वैल्यू में हमें सेमेस्टर सेकेंड की वैल्यू को लुकअप करना है. सो हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वी लुकअप, मीन्स फॉर्मूला के अंडर फॉर्मूला. Okay. ठीक है. सो आवर लुकअप वैल्यू वुड बी E01, put comma here, in table array. So in sheet number 2 we will select the whole database and pressing F4 to lock this cell, put comma here, and column number would be 2, sorry, 3, 3. match type 0, close sub bracket, put comma here. Now it is asking value if error, means अगर इस फॉर्मूला से कोई एरर आता है तो उसे आप किस दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना चाहेंगे. सो हियर आई एम राइटिंग डाउन द टेक्स्ट
under inverted commas, I can declare that student absent. Okay. Or you can say that not attempt anything. Close the bracket, look at the result. Okay. Mm. So this was your formula. Understood, ma'am. I hope you get it. Yes. सो जो हमारे पास्ट असाइनमेंट से वी लुकअप एच लुकअप की वो भी आप सॉल्व करोगे and I'm sharing with assignment of index and match functions too, and I will also suggest you to please solve all these queries through xlookup too, because xlookup is a replacement of all the formulas. वो VLOOKUP का भी रिप्लेसमेंट है, वो HLOOKUP का भी रिप्लेसमेंट है, वो इंडेक्स और मैच का भी रिप्लेसमेंट है. Okay. Because Yes, onward, ma'am. I'll onward, try. onward, onward 2021 version, we have XLOOKUP formula. Yeah, the thing is, ma'am, I have 2019 version of the MS Then then Office. go then go with index and match. Okay, ma'am. Yes. Okay, but still, if you are able to update your system, then it would be fine. Otherwise, it's okay. You have an option of index and match. Yes, ma'am. That's why I told you, because अभी भी कुछ existing users हैं जो अभी वही version use कर रहे हैं, तो वहां पर वो x2 का formula नहीं apply कर पाएंगे. Then they have an option of index and match. Yes, ma'am. So Okay. our next topic would be on means on tomorrow. If you अगर आपको कोई query हो तो आप solve पूछ सकते हो. Otherwise, our next topic would be on tomorrow. Will be filter. Okay. Okay, bye bye, Shweta. Yes. Bye, ma'am.